Very good morning, children. So today we are going to start with exercise 7.5 of chapter number 7, fractions. Question number 1 is with this fraction, write this fraction appropriately, whether it is subtraction or addition. That we have to find out. फिगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज देयर, उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फाइंड आउट करना है कि जो इक्वल टू के बाद जो आंसर आया है whether it is addition or a subtraction. So let us convert this into fraction. So first total find out how many parts are there. So total 1 2 3 4 5 parts are here. So denominator is 5, shaded part is 1. Moving to the next, here total parts 5, shaded portion 2. Okay, so and in the last equal to what we have, total part is 5 and in the shaded part 1 2 3 we have 3. So obviously when we add 1 plus 2, see denominator is as it is equal to 5 और जब हम numerator add करेंगे 1 plus 2 we will get 3. Therefore this figure is for addition. Okay, this is for addition. Next, in this circle, this is a complete circle shaded, means total how many parts are there? 1 2 3 4 5. Total 5 parts, that is in the denominator. Out of 5, 5 portion are shaded, so 5 in the numerator. Next, here in this circle total parts 5. Out of 5, 1 2 3 3 are shaded, so what will write here? 3. And after equal to what we have, total parts 5 and shaded 2 parts. Okay, तो अब ये सम होगा 5 minus 3, then you will get 2. Okay, तो ये जो फिगर है, जो रिप्रेजेंटेशन है, that is for subtraction. तो हमें क्या करना है? 5 denominator 5 is as it is, so 5 minus 3 is 2. So this is of subtraction. Next, here total how many circles are there? Total 6. So 6 in the denominator, 2 circles shaded, so 2 in the numerator. Here 6 circles total, 6 in the denominator, 3 circles in the numerator. And after equal to total circles 6 and shaded 1 2 3 4 5. Okay, so here we can see that denominator as it is 6, and when we do 2 plus 3, when we add 2 to 3 we will get 5. So this is for addition. Okay, this figure represent addition. Clear? Let us move to the next question. Question number 2. Here we can see the question number 2. We are dealing with like fractions. Okay, यहाँ पे like fractions दिए गए हैं. So let us start solving the sums. First question, 1/18 plus 1/18. अच्छा, तो अब हमें क्या करना है? Denominators are same, so right, we'll retain denominator common. Common denominator एक बार लिख दिया हमने 18. अच्छा, now 1 plus 1 numerator will add. हमें numerator को add करना है दोनों को, so we will have 2/18. Okay, so what is the answer for this? 2/18. और इसके बाद आपको अगर पूछा गया है reduce form करिए, तो आप इसको reduce भी कर सकते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे देख लेते हैं हम. We can reduce 2 into 1/2 into 9. ठीक है, हम लोग इसको ऐसे रिड्यूस भी कर सकते हैं. So 2 cancel, we have 1/9 as the answer. Okay. Question number 2, 8/15 plus 3/15. So same numerator, denominator as it is 15 we will write, and both the numerator we will add, that is 8 plus 3. So we will have 11/15. अब इसका हम रिड्यूस फॉर्म नहीं कर सकते because 11 is a prime number. Okay, its factor is 1 in itself. तो हम आगे इसको रिड्यूस फॉर्म नहीं कर सकते. This is the only reduce form. Next, 7/5 minus 5/7. So write the denominator once as it is. In the numerator 7 minus 5. So what we have, 7 minus 5 is 2 and upon 7. So prime numbers. Next, 1/22 plus 21/22. So what we will have? 22 as it is. 1 plus 21 in the numerator. So 1 plus 21 is 22/22. So yes, this is when 22 is divided by 22, we get whole number 1. Okay, moving next to question number E. Here we have 12/15 minus 7/15. So we will write
question, 5/8 plus 3/8. So denominator as it is, in the numerator it will be 5 plus 3. So here we will have 8/8. So this is 8/8 is whole number 1. 8 divided by 8 is 1. Next, 1 minus 2/3. Now here what the thing, here it is whole number 1 and subtract 2/3. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यूज 1 as 3/3. ठीक है, 1 को हमें कैसे यूज करना है, 3/3 दैट इज होल नंबर 1. पर क्यों हमने 3/3 किया है, क्योंकि जो 2 का डिनोमिनेटर वो क्या है, 3 है. सो टू मेक देम अ लाइक फ्रैक्शन मींस जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, हमने 1 क्या लिया है, 3/3 लिया है, ना कि 5/5 या 7/7. ओके, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमने उसे 3/3 इसीलिए लिया है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप, 3/3 डिनोमिनेटर कॉमन, न्यूमरेटर 3 minus 2, so we'll get answer 1/3. Next question, 1/4 plus 0/4. So obviously 4 is common denominator, 1 plus 0, we will have 1/4. अच्छा, now this sum 3 minus 12/5. अब let us do it this sum properly. The sum next is 3 whole number 3 minus 12/5. अच्छा, first step to convert this number into fraction with the denominator 5. हमें जो होल नंबर 3 है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बट उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, सो दैट वी कैन मेक इट एज अ लाइक फ्रैक्शन. तो हम क्या करेंगे इसमें, वी कैन हैव 3 दिस होल नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 into 5. ठीक है, अल्टीमेटली 5 into 5 is 1 and 3 into 1 is 3. हमें ओरिजिनल नंबर मिल रहा है. ठीक है, इसलिए हम लोग ने डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, 5 in the numerator and 5 in the denominator. ओके, सो माइनस दिस 12/5 as it is. ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 3 into 5 will be 15, denominator as it is 5 minus 12/5 as it is. अब ये दोनों राइट फ्रैक्शन हो गए. अब हम इसको डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, and in the above 15 minus 12. So what we will have the answer, 15 minus 12 is 3. Yes. Shubham painted 2/3 of the wall space of his room. His sister Madhvi helped and painted 1/3 of the wall space of the room. So how much did they paint together? Okay, so here in the question, see the word together. Okay, together means हमें साथ में मिलके फाइंड आउट करना, दोनों ने कितनी दीवार पेंट करी है. ठीक है, now sentence you have to write, Shubham painted 2/3 of the wall and Madhvi painted 1/3 of the wall. तो दोनों ने मिलके साथ में कितना पोर्शन दीवार का पेंट किया है, कितना पोर्शन वॉल का पेंट किया है. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट. सो Shubham painted 2/3 of the wall and Madhvi painted 1/3 of the wall. Okay, so together है तो हमें ऐड ही करना है. So fraction, denominator same, like fraction, so denominator will write as it is 3 and 2 plus 1 in the numerator. So what we will have, 3/3. Okay, so they have total कितना पार्ट्स था 3 का and they have painted the wall completely because वो पूरा 3 out of 3 है. ठीक है, they painted, they together painted 3/3. Okay, is equal to 1, that is complete wall. Okay, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन आउट ऑफ आउट है, ओके, 3 out of 3 means that is complete wall. So let us move to the next question number 4. Here the question is fill in the missing fractions. जैसे missing number fill करते थे वैसे फ्रैक्शन फिल करने हैं, not a big deal. The condition is जो भी आंसर में जो फ्रैक्शन किए हैं, आंसर में जो भी डिनोमिनेटर में है वही आपको चेकआउट करना है. ठीक है, फर्स्ट सम
डिनोमिनेटर 7/10 और इक्वल टू के बाद जो भी नंबर है उसका क्या है, डिनोमिनेटर भी 10 है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो भी है आपका जो डिनोमिनेटर यहाँ है वो नीचे 10 ही होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको यहाँ आंसर में 10 मिलेगा, okay? और डिनोमिनेटर शुड बी 10 so that you can get in the answer denominator 10। दोनों को आपको लाइक फ्रैक्शन ही लिखना है, ओके। अच्छा 3 कब मिलेगा, what you will subtract from 7 so that you can get 3, so 4, when we subtract 4 from 7 we will get 3, so our missing fraction here is 4/10, okay। Next B question, check the denominator first, here in the question it is 21 and equal to के बाद भी denominator क्या आ रहा है 21, so denominator for the missing fraction will be 21। अच्छा -3/21 है और equal to क्या आ रहा है 5/21। अब 5 plus 3 is 8, so 8 minus 3 is 5। Question number C, here again the denominator is 6 here also and after equal to also 6 is the denominator। अच्छा अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 3 plus 3 6, so obviously 6 minus 3 will be 3, so our missing fraction is, you can write 6/6 or you can also write 1, okay। So both the numbers are correct, but your question is write the fraction, okay, they are asked about the fractions, तो हम fraction form में 6/6 ही लिखेंगे, so that is also correct, okay। Next here check the denominator, it's 27 in the denominator and after the equal to also we have 12/27, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एडिशन करना है, हमें ऐड करना है ताकि हमें आंसर 12 मिले, तो एडिशन में रखा है तो हमें ऑब्वियसली सब्सट्रैक्शन करना होगा। 12 minus 5 is 7, so here our missing number is 7/27, so our missing fraction is 7/27 for D, okay। Always remember that your denominator should be matching with the other fraction and or you can say that you have to convert into like fraction। Next question, question number 5 is Javed was given 5/7 part of a basket, okay, of a basket of oranges, what fraction of oranges was left in the basket। Suppose एक orange की basket है, okay, one is a basket of oranges, okay, and out of complete one basket he was given 5/7 part, okay, this is one complete one basket and out of one complete basket 5/7 part was given to Javed, okay। Now what fraction of oranges was left in the basket, अब basket में कितने oranges fraction part बाकी रह गए हैं, means left means बाकी है, okay। A basket means complete basket, one complete basket, तो हमें ये number 1 लेना है, okay। So from one complete basket what fraction was given, 5/7 fraction, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ है 1 and what is the denominator for 5/7, 7 है। अब हमें क्या करना है, 1 को हमें कन्वर्ट करना है लाइन फ्रैक्शन में बाय 5/7, ठीक है। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विद द डिनोमिनेटर 7 लाने के लिए 7/7, okay। So we can write 1 as 7/7, so here we can write 1 is equal to 7/7, okay, we are doing like this, okay। Now you can write subtract 5/7, now both the denominators are same, means both have become like fraction, so now you can solve here, denominator as it is 7, in the numerator 7 minus 5, so we will get 2/7, so he what fraction of oranges was left in the basket, so you
basket.